अमेरिका के चुनावों में अर्थव्यवस्था और महंगाई मुद्दा बने हुए हैं। कमला हैरिस के लिए वोट मांग रहे बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने जो इकोनॉमी बनाई थी उसे ट्रंप ने बर्बाद कर दिया, जबकि ट्रंप ने आरोप लगाया कि कमला हैरिस के रहते महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। ट्रंप ने लोगों से वोट देने की अपील की और अवैध प्रवासियों पर भी बयान दिया। वहीं स्विंग स्टेट्स में हुए सर्वे में ट्रंप को अब तक बढ़त बताई जा रही है, जबकि कमला हैरिस की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 5 नवंबर को मतदान होगा और 5 नवंबर को ही नतीजे भी साफ हो जाएंगे। कमला हैरिस ने अपना हेल्थ रिकॉर्ड सार्वजनिक किया है, जिसमें उन्हें पूरी तरह फिट बताया गया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डोनाल्ड ट्रंप से भी हेल्थ रिकॉर्ड जारी करने की मांग की गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनते ही वो अवैध प्रवासियों को वापस भेजेंगे। ट्रंप ने एक कदम और बढ़ाते हुए ऐलान कर दिया कि कोई देश यदि अपने प्रवासियों को वापस नहीं लेगा तो उस देश के सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। Criminals. And Kamala said a few weeks ago that the people that we take in are much nicer than our criminals. No, they make our criminals like the nicest people you've ever met. The only good thing is they do. Our criminals are considered extremely nice by comparison to the people that we see. They'll cut your throat, and the next morning they won't even remember. This is what they do. These are really bad. These are really evil people. And they also have terrorists coming in, and they have the drug lords coming in, and they say, if you ever come back, we're going to kill you. So we're stuck with them, but we're not stuck with them. They're going back. They're going back very soon, very quick. They're going back, and they're going back fast. And if the countries don't want to take them back, I just say very simply, that's okay. We're going to tariff every damn product you sell into the U.S. डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को मुद्दा बना रहे हैं। इधर कमला हैरिस के लिए वोट मांग रहे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ट्रंप जिस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वो ओबामा इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। And the reason some people think, wow, I don't know, I remember that economy when he first came in being pretty good. Yeah, it was pretty good because it was my economy. We had 75 straight months of job growth that I handed over to him. It wasn't something he did. I had spent 8 years cleaning up the mess that the Republicans had left me the last time. So just in case everybody has a hazy memory, he didn't do nothing except those big tax cuts. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी जनसभाओं में कमला हैरिस पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते रहे हैं। ट्रंप ने महंगाई के आंकड़ों के साथ फिर कमला हैरिस पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमला हैरिस के रहते अमेरिका को महंगाई से राहत नहीं मिल सकती। Yesterday, it was announced that inflation surged viciously again last month, coming in at a much higher number than anticipated. Your food prices went way up, higher than expected. Your rent and housing costs went up much more than expected. Your car prices went through the roof. Yet Kamala Harris has no plan to fix it. You ever hear her? She goes, well, no, we did everything wonderfully. The place is falling apart. Then she's got ideas. I know what I'm going to do. Why didn't she do it 3.5 years ago, right? Kamala has already cost the typical family $29,000 with her horrible inflation and the cost of inflation. Yet she said this week, when asked the question, that she can't think of one thing she could do differently, right? डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस पर लगातार हमलावर हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को महान बनाने के लिए कमला हैरिस का हारना जरूरी है। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो ना तो झुकेंगे और ना ही रुकेंगे, चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। Destroyed this state, but we are going to save it, and we're going to make it better than ever before. Yet I've come here today not only to talk about California, where you have one of the worst governors in the country, Gavin Newsom.
No, but you definitely had somebody here that was horrible. Kamala. And now she wants to destroy our country. We're not going to let her destroy our country like she did San Francisco, right? But how will we save America from suffering the same fate? Because if she's here, you know how we'll do it? By voting for Trump. It's very easy. Kamala Harris and the radical Democrats have destroyed this state. California's really, it's a paradise lost, but we're going to bring it back. Don't worry about it. We're bringing it back. It'll happen fast. We'll stop the murderers from coming in, the drug dealers, everybody coming into California, coming into our country. Through generations of American history, California stood as the beacon of what our country aspired to become. It really did. It had everything. It had the weather. It had the water. The state had the best schools, the safest communities, and a booming middle class. But all that was eradicated by decades of the very policies that Kamala Harris wants to now force upon America. I don't think it's going to happen. And by the way, we're leading in all the polls, but we have to win. Too big to rig. We're leading in the polls, but we have to do it too big to rig. कमला हैरिस जनसभाओं के बजाय टॉक शो और मीडिया के जरिए प्रचार कर रही हैं, जबकि ट्रंप लगातार स्विंग स्टेट्स में रैलियां कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में लोगों से रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट करने की अपील की है। I want to send our love to all of the people back east who are recovering from two really devastating hurricanes. Our hearts are with those who lost a loved one, and we are with you all the way. We're getting it straightened out, and we need better help from a thing called the federal government. We need better help from, I guess you could say, from Kamala. They've been very bad. They've been in particular bad to North Carolina and other parts that were really devastated, really bad, but we have to get them on the ball a little bit. God bless them all. God bless you all. Thank you very much. 25 days from now, we are going to win Nevada. We are going to defeat Kamala Harris, and we are going to make America great again. From the very beginning of this journey, I have been on a mission to rescue our nation from a failed and corrupt political establishment, and it is corrupt. And to give you back the country that you believe in, the country that you were born in, and the country that you deserve, and we're going to do it. In that mission, I will never quit, I will never bend, I will never break, I will never yield, not even in the face of death itself. Won't happen. As you know, I'm putting everything on the line to fight for you, and I am also only asking you for one thing. Vote! Get out and vote! डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस से सवाल भी किया है। उन्होंने पूछा है कि अमेरिका में आखिर अवैध प्रवासियों की जरूरत क्या है, वो भी तब जब इन अवैध प्रवासियों में हजारों हत्यारे भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त बचा है और एनबीसी के ताजा सर्वे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को बराबरी पर बताया जा रहा है। वहीं एक और सर्वे हुआ जिसमें स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को जीतता हुआ बताया जा रहा है। इन सबके बीच कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 3 हफ्ते बाकी बचे हैं और इस बार सभी सर्वे भी बटे हुए दिखाई दिए। किसी भी सर्वे में क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही। मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है। एनबीसी के ताजा सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को 48% वोटर्स की पसंद बताया गया, जबकि कमला हैरिस को भी 48% वोटर्स की पसंद बताया गया। अमेरिका के चुनावों में हार जीत का फैसला स्विंग स्टेटस ही करते हैं और ज्यादातर स्विंग स्टेटस में डोनाल्ड ट्रंप को जीता हुआ बताया जा रहा है। रियल क्लियर पिक्चर के सर्वे में जॉर्जिया में कमला हैरिस को 0.5% वोट से जीता हुआ बताया जा रहा है, जबकि बाकी 6 स्विंग स्टेटस में डोनाल्ड ट्रंप को 1% वोट से विजेता बताया जा रहा है। आरसीपी के सर्वे में कहा गया कि वोटर्स को अर्थव्यवस्था, अवैध प्रवासी और महंगाई के मुद्दे ही वोट देने के लिए मुफीद लग रहे हैं। वहीं चुनावी कैंपेन में एक दूसरे पर सीधा हमला किया जा रहा है। अमेरिका में मीडिया रिपोर्ट्स आई
कि कमला हैरिस ने विकिपीडिया से पढ़कर अपनी पॉलिसी लोगों को बताई है, तो रिपब्लिकन पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार जेडी वेंस ने कमला हैरिस को आड़े हाथों ले लिया। चले इसी के साथ आगे भी खबरों को